Hello dear friends, welcome back in Code Learnium. Want to put your website live on the internet for free in just a few minutes, whether you're a completed beginner or just starting HTML, CSS or JavaScript. This video is for you. I'll show you step by step how to deploy your website on the Netlify. So dear friend, let's start the video. But first, like this video and subscribe to our channel to stay connected. सो इसके लिए आपको netlify.com पे विजिट करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज द नेटलीफाई। नेटलीफाई इज ए पावरफुल होस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज a बिल्कुल फ्री and you can deploy any front-end project on the Netlify, whether it was created by the React, Vite or the Next.js, and whether if it is the created by the just for HTML CSS. So this is the good for the like portfolio website or any static website. So you can start deploying your projects, because if you will deploy your projects on the live link so you can share your link anywhere and you can show your creativity, your skills to the other audience. So for this, let's start creating the account. So click on the get start, and then you can start deploying using the GitHub or the using the email. So if you have GitHub, so you can sign in with the GitHub. But if you don't have GitHub, so you can create the account using email. And so you have to enter the email. So like I have entered the email ID, and then I have entered the password. So like I enter the password, and then click on the sign up, and then you will receive the verification mail on the email. So you have to open the mail. So let's open, एंड आप देख सकते हैं यहाँ से नेटलीफाई से मुझे मेल आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस मेल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, एंड देन नो यू कैन सी द आवर अकाउंट इज वेरीफाइड। and then no you will able to see the like this interface. यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नाम एंटर करना होगा. So like I enter the name like code learnium या कोड लर्नियम. बट यहाँ पे हमें फर्स्ट नाम और लास्ट नाम इंटर करना है. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नाम एंड यहाँ पे लास्ट नाम इंटर किया. आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव व्यू में कोड लर्नियम आ चुका है. एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे हो आर यू प्लानिंग टू यूज नेटलीफाई. सो हम यहाँ पे जस्ट फॉर मैंने यहाँ पे पर्सनल कर दिया है. यहाँ पे आप व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू वांट टू बिल्ड. सो जस्ट आई जस्ट क्लिक ऑन द ई कॉमर्स, एंड देन आप यहाँ पे कुछ भी जूनियर वेब डेवलपर, सीनियर वेब डेवलपर कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया है. एंड देन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट और योर टीम नाम. सो लाइक मैंने यहाँ पे भी कोड लर्नियम टाइप कर दिया है. एंड देन कंटिन्यू टू डिप्लॉय पे क्लिक करना है. And then you can see we have successfully able to create the account. and आप यहाँ से try netlify drop और choose template. तो आपको यहाँ पे ट्राई नेटलीफाई ड्रॉप पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आपके प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं. सो लाइक let's deploy first our project using the drag and drop method. Then I will show you how to deploy project using GitHub, because if you will deploy project using the GitHub, so the your project will be updated automatically when you will update your code on the GitHub. So the main benefit to deploying using GitHub, the main benefit is project will be auto updated. You don't need to update manually. but अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करेंगे तो आपको मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा, मैनुअल रीडिप्लॉय करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू डेमो हाउ टू अपलोड यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. सो मैंने यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए ये साइट बनाई, ये बनाया हुआ है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट. सो इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया. वेट, लेट्स ट्राई अगेन. Yeah, no, our project is uploading, and then wait for some second.
and then boom, our deployment is success. View project, and then you can see the our website is live. Congratulations, you have successfully deployed your project. So this is just a HTML, CSS, and JS code. So you can see the some interactivity also, and this is just for the demo purpose. And now let's deploy the our real project, which is the to-do application, and we will deploy this using the GitHub. So because if you will deploy project using GitHub, so this is the good practice for the auto updates. आपको डैशबोर्ड पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्रोजेक्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं. इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मीन्स यू कैन you will upload, you will import project from the GitHub and start a template. You can start that manually by template, and you can deploy your project, which we already seen. This is the method which we deploy. It means the drag and drop method, and now we will see the using the GitHub method. So for this you have need to first authorize using the GitHub. So for this, click on this button, and then this will try to authorize. You can see the permission dialog is open, and यहाँ पे आपको करना होगा authorize Netlify. And dear friends, if you want to authorize your GitHub with the Netlify, so you should have this account using the same email on the GitHub and the Netlify. So it means, so you can see we are giving the permission of the all repository and installing, and then boom, you can see we now our all repository we able to see here. So we have right now we have 3 repository. So right now we want to choose this, we want to deploy the to-do application. So click on this, and then यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम आप कस्टम यहाँ पे नाम दे सकते हैं. सो जैसे मैं यहाँ पे टूडो ऐप ही रख देता हूँ, टूडो ऐप. This name is not available. So yeah, no, this name is available because the application name should be unique. And then branch is the master, base directory is the root. We will keep empty because the directory is our code directory is the root. You can see we have the all entire code in the root directory. And then this will everything you can keep it there by default, and click on deploy to the app, and then boom, your project is deploying, and boom, you can see our project is successfully deployed. And let's visit on this, and then boom, you can see the our project is running on the live link, and this is the https link. So this is very secure, you can use it. This is the very good, and like use it. Task 1, you can see this is working. So dear friends, I hope this video is helpful you. So subscribe to our channel, and thanks for watching the video.